Are you getting low views on your videos? इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि ऑडियंस रिटेंशन। दिस मीन्स लोगों आपके वीडियोस से जल्दी हाई एग्जॉस्ट हो जाता है। सो आपके वीडियोस को बोरिंग से इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है? सो इनमें बहुत से रास्ते हैं। सो इनमें इजी प्रोसेस ये है कि अच्छा वीडियो एडिटिंग। इन दिस वीडियो विल बी शेयरिंग 9 अमेजिंग ट्रिक्स इन 4 ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एडिटिंग करते हैं। विद दिस आपके व्यूज इंप्रूव होने लगते हैं और कमेंट्स भी। इस वीडियो में सबके लिए कुछ ना कुछ हो गई। इफ यू डू डॉक्यूमेंटरीज और एडिटिंग दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। सो फर्स्ट ट्रिक इन एलिमेंट्स में जान डालने के लिए यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड की फ्रेमिंग। की फ्रेमिंग के हेल्प से स्क्रीन पे जो कुछ भी है वो एनिमेट कर सकते हो। लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे, जूम इन, जूम आउट और स्पिन, जो लिटरली जो कुछ भी तुम करना चाहते हो। I use inshot editor. For example इस टेक्स्ट ऐड करना है। सो नाउ क्लिप का एंड सेट कर लो। यहाँ पर इन्वर्टेड ट्रायंगल ऑप्शन है, इसकी हेल्प से की फ्रेम ऐड करना है और रिमूव। सबसे पहले सब्सक्राइब टेक्स्ट को लेफ्ट एंड राइट साइड की फ्रेम ऐड करना है एज शोन इन वीडियो। नाउ सी की फ्रेम एडेड। रेड एरिया है, इस टेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट एडेड एंड एंड पॉइंट ऑल्सो। अगर शुरू से देखो आर टेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक एनिमेट हो गया है। सी हाउ इट इज एनिमेटेड। दैट्स सिंपल। ए फ्लैट डेको कैसे सब्सक्राइब टेक्स्ट को एंड की फ्रेम पर कैसे इंक्रीज किया। एब स्टार्टिंग से एनिमेट करते हैं डेको टेक्स्ट स्मॉल से लार्ज कैसे हो रहा। So, ये बस एक क्विक एग्जांपल था टू शो की फ्रेमिंग काम कैसे करता है। अब ऑफ कोर्स तुम इस नॉलेज के बेसिस पे और भी बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं इसका एंड वाला की फ्रेम और स्टार्ट वाला की फ्रेम दोनों ही डिलीट कर देता हूँ और टेक्स्ट को सेंटर में ले आता हूँ। नाउ लेट्स से मुझे टेक्स्ट में एक सडन जूम इन इफेक्ट चाहिए, मतलब यहाँ तक उसका साइज सेम रहेगा और फिर अचानक से ये जूम इन हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे की फ्रेम ऐड करूंगा। ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा वाला की फ्रेम जस्ट इसके बगल में डालना है। तो मैं टाइमलाइन पे से स्लाइड करूंगा और दूसरा वाला की फ्रेम यहाँ डाल देते हैं लाइक दिस। ये हो गया इसका एंडिंग पॉइंट और यहाँ पे मैं टेक्स्ट का साइज बढ़ा देता हूँ। लेट्स से इतना जूम इन करना है। सो अब अगर इसे प्ले करके दिखाऊं तो इसमें एक जूम इन इफेक्ट आ चुका है। सिमिलरली अगर टेक्स्ट को स्क्रीन से एग्जिट करवाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए पहला की फ्रेम यहाँ डाल देता हूँ और दूसरा वाला की फ्रेम कहीं भी डाल देते हैं जहाँ भी चाहता हूँ मैं कि वो टेक्स्ट स्क्रीन से एग्जिट हो। लेट्स से यहाँ पे डाल देते हैं दूसरा की फ्रेम और इस पॉइंट पे मैं टेक्स्ट को स्क्रीन के बाहर कर देता हूँ। एंड नाउ इफ आई प्ले दिस वी हैव क्रिएटेड अ वेरी नाइस एग्जिट इफेक्ट। अब ऑफ कोर्स यही सेम चीज तुम किसी स्टिकर के साथ भी कर सकते हो। तो मैं इस टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ और कोई स्टिकर डालते हैं यहाँ पे। लेट्स से दिस वन। स्टिकर में भी जूम इन इफेक्ट डाल सकते हो। स्टार्टिंग वाला यहाँ पे, एंड वाला यहाँ पे डाल देते हैं और इसे जूम इन कर दूंगा एंड स्टिकर में भी जूम इन इफेक्ट आ चुका है लाइक दिस। सेम चीज पसंद आया होगा, इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं।
फ्लैट ट्रांजिशन क्या है? खास से बेस्ट ट्रांजिशन अवेलेबल मी है। एग्जाम्पल filmora। ए फ्लैट नेक्स्ट इस 3 मिनट्स को कंपल्सरी वॉच कर लेना, देन डिसाइड filmora फ्री वर्जन या प्रो वर्जन गुड है या नहीं। आप देख सकते हो बहुत सारे ट्रांजिशन अवेलेबल है, ऐप ही चेक कर लेना। हर एक ट्रांजिशन अप्लाई करते जाऊंगा। आप देख सकते हैं कि यह पर ट्रांजिशन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लाइक, फीचर्ड, ग्लिच, रेट्रो, शेक, फ्लैश, पार्टी, सिनेमैटिक, लेंस, बेसिक, स्पोर्ट्स, नेचर्स, लेंस। इन ईच टाइप में के बहुत 100 जोड़ ट्रांजिशन फ्री में अवेलेबल में है।
Thank you for watching our video. Our vision is to respect viewer time.